Hello and welcome to DD Sports. You're watching Fourth Empire. I'm Frank Rausen Pereira. Those pictures that we saw from Pune, of course, speak 1,000 words. Emotions written all over the face of Krunal Pandya. It showed us what this knock really meant for him and for the entire family. Both brothers embracing each other after the debutant Krunal Pandya scored a half century and ensured that India reached a respectable target, a competitive total of 317 scored by India in the first one-day international between India and England. We'll talk about the first innings during this innings break, of course, and let's first look at the batting card, which we can have on our screens right now. This is the Indian batting card for today. Rohit Sharma and Shikhar Dhawan getting off to a very solid start. Rohit Sharma scoring 28 and Shikhar Dhawan going on to score 98 runs, missing out on his century there by 2 runs. Ably supported by Virat Kohli, who came in at number 3, scoring a half century at a quick pace. And then once he got out, we saw the Indian innings going through a bit of a lull with Shreyas Iyer suffering at the centre as well as the other players too getting out in quick succession. KL Rahul and Krunal Pandya then picked up the innings and ensured that we reached a comfortable score of 317. Let's look at the England bowling now, where England used 6 bowlers in total. The spinners, of course, had a tough outing today, and the fast bowlers who started off very well got the punishment later on towards the end of the innings. The pick of the bowlers, of course, was Ben Stokes, picking up those 3 wickets and supported by Wood as well, who picked up 2 wickets, but all the other bowlers were expensive. Joining me in the studio right now to talk about the Indian batting as well as the English bowling, I have with me Ajay Ratra, former Indian cricketer, and Munish Jolly, former cricketer and sports commentator and sports expert as well. Thank you, gentlemen, for joining me on Fourth Empire. Ajay, let me begin with you first. Interesting there to see our Indian batting, start off well, going through a good middle period, and then, going through a rough patch in between, and then finishing off very strong at the end. See, Frank, all in all, if we see 317, I think it's a competitive total. And to start up with, जो opening का काफ़ी kiosk चल रहा था, so we are happy today कि आज अच्छा opening partnership मिला. It was 50 plus, and most importantly, Shikhar Dhawan जो T20 में उतना successful नहीं थे, though he got only 1 chance in that, but today he managed to score 98 runs. He was lucky as well. He got a few chances, but today he played really well. देन मिडल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ, बट आज तारीफ़ करनी होगी जिस तरह से केएल राहुल और कुणाल पांड्या ने बैटिंग की. मतलब अराउंड 40 ओवर्स 5 आउट हो गए थे, एंड फ्रॉम देयर दे टुक ऑफ लाइक दे स्कोर्ड 100+ रन पार्टनरशिप इन 10 ऑड ओवर्स. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम जिस तरह से बैटिंग किया. केएल राहुल जो T20 में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, आज बहुत अच्छी खबर है ना सिर्फ केएल राहुल के लिए बल्कि इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए और हम सब स्पेक्टेटर्स के लिए भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की. Absolutely. Let's talk about Shikhar Dhawan as well. He was struggling for form, but scoring 98, missing out on a century, Munish, but a well-deserved knock. What does this mean for him and for his confidence levels? See, he'll be happy, but I feel that he'll be bit disappointed with missing out on that 100 because, he took India, to a very comfortable position. And there is a time when, you get a delivery, you've got so many short deliveries, and one such delivery, you miss time and you play it to just one lone fielder inside the 30-yard circle on the onside, and that was the captain, Eoin Morgan. He'll be very disappointed not to get 100 because, when you score 100, you silence all your critics. But what a timer of the ball, and especially when he played those flicks and the pulls and he was finding those gaps between the mid-wicket and the backward square leg fielder, he was amazing. He just planned his innings, didn't go after the bowlers initially, but after that, he found the gaps and he waited for the bad balls to come. And I think that's a sign of a great, a very good cricketer, somebody who's got a great timing. And one thing I liked about Shikhar Dhawan today is that, he started dictating the terms to the bowlers. And that's very important when you're batting up in the order. Absolutely, very true. And let's talk about Krunal Pandya as well. KL Rahul की तो बात already हम कर चुके हैं. Krunal Pandya के लिए, what a debut. And we saw the emotions on his face. He could not get a word out. He said that this knock was for his father, and that's it. He broke down. What does this mean for a player? आई थिंक फ्रैंक मुझे लग रहा है कि ये जो सीरीज़ है T20 भी और वनडे जो
ये डेब्यूटेंट्स का सीरीज लग रहा है, स्पेशली जो बैटिंग में है। 2 T20 में जो डेब्यू किया है ईशान ने, और सूर्य कुमार यादव की भी जो इनिंग थी, डेब्यू इनिंग, उसमें उन्होंने 50+ बनाया। आज कृणाल पांड्या ने बनाया। सो आई थिंक इनकी बैटिंग देख के लग नहीं रहा था कि इनका डेब्यू है। मुझे लगता है थैंक्स टू IPL एज वेल, जिस तरह से ये प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और इनको इंटरनेशनल क्रिकेट भी वैसा लग नहीं रहा। देयर वाज नो नर्व्स एट ऑल, मे बी क्योंकि इन प्लेयर्स के साथ डे इन डे आउट ये IPL में इतना खेल चुके हैं, वो रीज़न लगता है। और बहुत ही मैं कहूँगा ज़रूरत के टाइम ऐसी इनिंग खेली। और आप स्ट्राइक रेट देखिए कि जिस तरह से 50 बनाया 31 ऑड बॉल्स में, 56, और 50 बनाया था 26 बॉल में। और आई थिंक इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है किसी भी डेब्यूटेंट के लिए फास्टेस्ट 50 का। और एक समय लग रहा था जब टीम का स्कोर 270 280 तक पहुंचना मुश्किल है, बट इन्होंने 317 तक पहुंचाया। जो मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, तो पूरा तारीफ करना होगा कृणाल पांड्या एंड KL राहुल, जिस तरह से इनिंग को 300 के पार लेके गए। Absolutely. A word on the partnership there between KL Rahul and Krunal Pandya. Munish, incredible debut as well as good coming back to form for KL Rahul. Yeah, I feel, let me talk about Krunal Pandya first. And Rahul was initially struggling. And you were just asking questions, what's going wrong with Rahul? And the only reason I find in that, Frank, is that he was with the Indian side. He was in the test squad, didn't play a game, travelled with them. T20, of course, when he got an opportunity, he didn't find that nick. And the only reason is when you're not under a match practice, these things do tend to happen. You don't time the ball the way you want to time. और कृणाल पांड्या को दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके की नॉक खेली। उसका एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, बड़ी नॉक खेल कर आ रहे हैं। और राहुल ने वैसा नहीं किया। अगर उन्हें टेस्ट मैचेस नहीं खिलाने थे तो राहुल को थोड़ा सा एक वो लेवरेज दे देना चाहिए था। गो एंड फाइंड दैट निक, play that domestic cricket and come back, because we'll need you in the limited overs version. And talking about that partnership between him and Rahul, of course, both of them, if you look at the last 5 overs, they scored at a rate of more than 14 runs an over, which is amazing. I mean, forget about what they did in the last 10 overs. I was personally feeling that, India will find it very tough to reach even to 300. I mean, Hardik Pandya going out at 205 and the score was 205. उसके बाद amazing knocks, amazing. Absolutely. At one stage, it did look like we were not going to score 300. Ji Ajay. Yeah, adding one more point to what Munish said. In T20 cricket, like KL was struggling. शिखर भी एक मैच खेले, रन्स नहीं बनाए। वनडे में आपके पास थोड़ा सा मुझे लगता है वो कुशन है आपके पास समय लेने का। इफ़ यू सी आज की इनिंग भी देखें तो इंडिया का स्कोर 6 ओवर में सिर्फ 15 रन था, और वो टाइम ले सकते थे इंडियन बैट्समैन। और 7वें ओवर में आई थिंक इन द ओवर ऑफ मार्कवुड 2 चौके लगाए, जो कि बहुत अच्छे शॉट थे शिखर धवन ने जो लगाया। तो मुझे लगता है ये भी एक डिफरेंस होता है। और T20 इट्स वेरी हार्श, और जब आपके पास समय नहीं है, रन्स भी बनाने हैं, आप अगर अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे और आपको तेज़ भी खेलना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन। और कहते हैं जब बैट्समैन के रन नहीं बन रहे तो यू कैन टेक टाइम, आप स्टे ऑन द पिच। वो T20 और टेस्ट क्रिकेट में आप कर सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है मुझे लगता है। और बड़ी अच्छी खबर है कि आज जो वो अपॉर्चुनिटी थी KL राहुल और शिखर धवन के पास, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और अपनी इनिंग को बहुत अच्छा पेश किया। Absolutely. It was a great knock by both the batsmen there in the middle order and ensuring that India reached a competitive target. Let's not forget that the bowlers are going to have a tough task at hand because this is a high scoring ground, and in the past as well we've seen teams easily chase down targets of over 300. Munish, going back to a point that Ajay was making earlier, this certainly seems like a tournament for debutants because all the debutants seem to have done well thus far. Yeah, and the biggest reason is because they want to get inside the side, and for them playing for India is huge, right? They also keep the seniors on their toes. जितने senior players हैं उनको वो अपने toes पे रखते हैं कि आप ध्यान से खेलना, पीछे जो है एक कतार बन रही है हम यंगस्टर्स की और हम किसी से कम नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ओनली IPL, आई थिंक जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, विजय हज़ारे ट्रॉफी होगी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही, बड़े प्रोफेशनल तरीके से खेली जा रही है। एक समय था जब हम कहते थे यार ऑस्ट्रेलिया की तरह जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारा क्यों नहीं हो सकता। And this is amazing. I mean, we've reached to those standards where the players are getting good remuneration, where they get paid well, per match fees is more, and then people want to play for the country because they find a career even if they don't find jobs. If they play one good season, they get good money. All these factors do come into play. Debutants की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अब क्या है कि it's just like a fruit in a tree. जब वो मार्केट में आएगा वो पक के आएगा. So don't need those chemicals कि उसे पकाओ थोड़ा सा खाने लायक बनाओ. Great for Indian cricket that we've got a cream of youngsters, whether it's spinners, fast bowlers or all-rounders.
I'll tell you what, Krunal Pandya will now give a very hard time to Ravindra Jadeja also, because similar pattern के दोनों खिलाड़ी हैं, batting, bowling, fielding दोनों बहुत अच्छा करते हैं, and the more important part is, Frank, they want to do something for the country. They want to do big for the country. And that's a good thing, and that's the good spirit, and that's the right spirit to have. Tough job as far as the selectors are concerned, but great for Indian cricket, and this is what we want to see more of. Ajay, let's also talk about what we can expect in the next innings. India has to bowl really well. We've got a full lineup of bowlers, which is good. We've got debutant, we've got some newcomers in the bowling lineup as well. So a lot of pressure on them, do you think, because they have to defend 317 or on a high scoring ground? जी, स्कोर का हम एवरेज स्कोर भी देखें तो 292 है बैटिंग फर्स्ट, तो मतलब उससे थोड़ा ये ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि इंडियन टीम ने वो रन्स बोर्ड पे लगा दिए हैं और 317 एक बार 300 क्रॉस की तो आपके पास साइकोलॉजिकल भी एज थोड़ा सा होता है, बट स्टिल रीच के बाहर नहीं है इंग्लैंड के लिए। और कंपैरेटिवली इंडियन का यंग बॉलिंग अटैक है और मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो लीड करेंगे इस यंग अटैक को। शार्दुल हैं, उन्होंने T20 में बड़ा अच्छा किया तो कॉन्फिडेंट होंगे। एक डेब्यूटेंट और हैं आज, प्रसिद्ध कृष्णा, एंड उसके अलावा भी कृणाल बैटिंग का भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल अच्छी गेंदबाजी ज़रूर करना होगा, ड्यू फैक्टर है। और इंग्लैंड की भी बात करें तो ऑयन मॉर्गन और बिलिंग्स थोड़ा सा इंजर्ड ज़रूर हुए ड्यूरिंग फील्डिंग, तो वो भी देखना होगा कि वो कितने फिट हैं बैटिंग के लिए। बट अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल है, यहाँ से मुझे लगता है कि इंडियन टीम को बॉलिंग यूनिट को ये मैच जिताना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। Since we are here, let's talk about the injuries as well. Owen Morgan getting one on the left thumb, it seemed like, while he was fielding that drive from Hardik Pandya, and then Billings injuring his shoulder as well. Looked like a pretty serious kind of an injury. Probably may not come back in the second innings. What does this mean for the English side? Well, the reports are yet to come in, but the update is that he's got 3 stitches, maybe couple of stitches on the joint, and they haven't ruled him out. So I expect Morgan to come in, and also Billings would be a bigger factor because somebody they can rely on, and he bats in the middle order. But things change. India started off well, then England came back into the game. We had a small batting collapse, and we were discussing what's happening. So let me not miss out on this point also. कि जब हमारे विकेट्स गिरते रहे, इंग्लैंड वापस आ गई गेम में, मुझे 2 चीज़ें समझ में नहीं आई कि बेन स्टोक्स जिन्होंने 3 विकेट लिए 8 ओवर में, उन्होंने अपना पूरा स्पेल क्यों नहीं किया। और एक चीज़ और समझ नहीं आई, आदिल रशीद, मोइन अली दोनों ने मिलकर 12 ओवर किए, लगभग 94 रन उन्होंने दिए, वो विकेट लेस रहे। क्या रोल उनका रहेगा और हमारे स्पिनर्स उनसे क्या लेंगे? बेन स्टोक्स का एनालिसिस देखिए, आई मीन ही चेंज्ड द गेम, ही ब्रॉट इंग्लैंड बैक इनटू द गेम, all the key wickets that he took, and then not bowling his full quota of overs. So it's not only the injury. I think the bigger injury is that you exposed Mark Wood in front of Rahul and Krunal Pandya, and they used his pace to score runs. Is there a lesson in all of this for the Indian bowlers as well? We saw Shardul Thakur as well as Hardik Pandya taking the pace off the ball in the T20 series that they played. So can we expect more of that when they come out to bowl today, Ajay? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में चेंज ऑफ पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शार्दुल ने बहुत अच्छे से यूज़ किया ड्यूरिंग द T20 सीरीज़। आज भी हम बात करें, यस मार्क वुड गॉट पेस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेंथ में थोड़ा सा एरर किया, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में आई थिंक फुलर और यॉर्कर वुड हैव बीन बेटर ऑप्शन, बट थोड़ा लेंथ में एरर किया। बट एंड ऑल्सो लाइक मुनीश सेड कि वो जो बेन स्टोक्स जो आज के सबसे सफल गेंदबाज हैं उनको ओवर्स नहीं कराए गए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इंग्लैंड जो है वो मिस कर रहे हैं। I'll just come back to you, Munish. We have to go across to the All India Radio studio right now. Let's go across there and see what's happening where they are standing by. Over to the air studio. क्या सवाल है आपका? दूसरी बार कॉल लगाया मैंने आपकी प्रोग्राम में। पहले बोला था कि इंग्लैंड को 250 रन पे रोकना आपको, और उसके अलावा भारत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। अब बॉलिंग की बारी है, तो बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करे तो 250 रन पे आगे ना जाने दो इंग्लैंड को। क्या फर्क पड़ता है बसंती लाल जी, अगर 250 की जगह 280 या 90 भी बन जाते हैं तब भी जीत हम सकते हैं। हाँ, तो बहुत जल्दी आउट करके अपने को मैच जीतना है मैम, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपके मुंह में घी आपके मुंह में शक्कर। अपने सवाल हम पूछेंगे जरूर, लेकिन दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। आयुष, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, पालपुरा खानपुर से बोल रहा हूँ। इम्तियाज से परा मेरा नाम है। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस? क्यों नहीं खिलाए? किसे? ऋषभ पंत को आज क्यों नहीं खिलाया? ऋषभ पंत को आज नहीं खिलाया, कृणाल पांड्या को खिलाया। आपको खली क्या, कहीं उनकी कमी खली आपको? नहीं, मुझे
नहीं खेली, मगर मुझे लगता है ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे वो फेवरेट मेरा प्लेयर है। ओके, वो आपके फेवरेट प्लेयर है, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो दिन है वो कृणाल पांड्या का। अगर पांड्या साहब ये सुन लेंगे ना कि जनाब मेरा डेब्यू था, मैंने अर्धशतक मारा और अभी भी ऋषभ पंत साहब को मिस किया जा रहा है। बात तो सही है, लेकिन सबसे देखिए पहले कितना इंटरेस्टिंग टाइम हाँ है जी, आज इतने कि सारे कितने players नए हैं। लड़कों की बात हो रही है। कभी ऋषभ पंत अब फेवरेट हो गया। जी। इट इज नॉट द सेम एरा। धोनी 10 साल तक सबके फेवरेट है। वीरेंद्र सहवाग सालों साल सभी लोग कहते थे कि मास्टर ब्लास्टर है। तो ये देखिए टाइम बड़ा एक्साइटिंग है। T20 ने गेम चेंज कर दिया है। अब जो नए नए बच्चे हैं वो बहुत जल्दी निकल रहे हैं। कृणाल पांड्या सडनली कल से हाउस होल्ड नेम हो गए। देखिए ऋषभ को लोगों ने मिस करना शुरू कर दिया है। KL राहुल फॉर्म में आ रहे हैं, विराट कोहली फिर से अच्छे रन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए इससे अच्छा और इंडियन Everyone has an opinion in India as far as cricket is concerned. One person may have even 5 opinions, and that's what we just heard in the All India radio studio. Munish, sorry I cut you short before you went across to the air studio. Go ahead, make your point as well as probably you want to take that on question on Rishabh Pant. See, Krunal Pandya can never be a replacement for Rishabh Pant. कि विकेट कीपर यहाँ बैठे हैं वो गुस्सा हो रहे थे कि कीपर की रिप्लेसमेंट आप किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर को नहीं कर सकते. बट आई जस्ट वांट टू मेंशन अबाउट डीडी फ्री डिश. यू नो दिस the reach of DD Free Dish is not only limited to India, because I've done free programs on the radio also, and we get, viewers, listeners across the world. So, एक तो हमारी reach बहुत है, and you get questions, you get ideas from the callers. जैसा उन्होंने कहा कि आज कृणाल पांड्या के बारे में जो तारीफ कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे. माई पॉइंट इज कि जब आप मिडिल ऑर्डर में इतना बैंक कर रहे हो, लेट अस नॉट फॉरगेट कि कृणाल पांड्या प्लेड अ मैजिकल इनिंग्स दैट वाज नॉट expected. He came out, he performed, he delivered. My bigger question is, what happened when Virat Kohli got out? I think वो जो एक फेज था ना, फ्रैंक, वो हमारे बैट्समैन ने, किसी बॉलर ने विकेट नहीं लिया, हमारे बैट्समैन ने वो विकेट दिया. You want to rely at number 4 batsman Shreyas Iyer. I think he needs to get a lot of maturity to build up that innings when the captain walks out. He's out, and he needs to build on those innings. I can understand Pandya can fail. I can understand that Rahul was not in good nick. But I think number 4 में जब श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, as a youngster, he should also keep this in mind that there are other people who are trying to take his place. He should be very careful and he should play more responsibly. He's got a great talent. He is a great talent, and I'm sure that these are all learning experiences, and he'll come out stronger after all of these experiences that he's had in the middle, and I'm sure he'll do extremely well as well. In the meantime, of course, let's take a look at what is happening across the country as far as the Dandi Yatra is concerned. The Prime Minister launched it on March 12th in the lead up to 75 years of India's independence. Here's a little video that was shot. मार्च 1930 अनकी की सुबह महात्मा गांधी जम्बूसर के लिए निकले. करीब 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद गांधी जम्बूसर पहुंचे, जहां स्थानीय सत्याग्रही शिवशंकर शुक्ला और धुलाभाई ने गांधी जी का जोरदार स्वागत किया. जम्बूसर में बापू को सुनने के लिए काफी संख्या में स्थानीय निवासी जुट आए. गांधी यहां दोपहर तक ठहरे, सभा को संबोधित किया और स्वराज भवन की स्थापना की, जहां आकर पदयात्री ठहरे हैं. गांधी जी यहाँ पर आए थे और इस कमरे में रुके थे, यहाँ पर विश्राम किया. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर जम्बूसर में घटी थी. धुड़ाभाई थे, बाकी सब बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, यहाँ पर उनसे मिले थे गांधी जी. गांधी के सुझाए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पदयात्री ने भी दोपहर तक जम्बूसर की यात्रा पूरी की. काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे गुलाब के फूल पदयात्रियों के हाथों में थमाकर उनका स्वागत कर रहे थे. पदयात्रियों के हौसले भी बुलंद थे, जो गांधी के चरण रज को माथे पर लगाकर जम्बूसर तक पहुंचे हैं. काम छोड़ के दौड़ के रोड के किनारे आ जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं. तब जाके हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो 12 मार्च को आह्वान किया कि ये अभियान, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, हर मन का उत्सव बने, वो अब हमें जाके सार्थक लग रहा है. आमोद पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में लड़कियां, महिलाएं, बच्चे माथे पर कलश उठाए, दिल में ढेर सारी खुशियां लिए फूलों की बारिश कर रही हैं. राज्य के श्रम मंत्री दिलीप ठाकुर पदयात्रियों के स्वागत में जुटे हैं. अपने दिल में जोश लिए पदयात्री आमोद के प्रांगण तक पहुंचे हैं,
जहां महात्मा गांधी ने रात्रि विश्राम किया था। Well, all right. Before we get closing comments from both my panelists here, let me also remind you that we are well and truly in the middle of the COVID-19 pandemic. Remember to follow a few steps to stay safe from the pandemic. What you can do is wear a mask whenever you step outside, wash your hands and face as regularly as possible, and maintain physical distancing. These small steps can go a long way in fighting the pandemic. And very quickly, gentlemen, Munish, starting first with you, your closing thoughts on Fourth Empire? Yeah, I would say that, Krunal Pandya was getting a bit emotional, but then I'll say that that's well done, but it's half done. Create a victory, and I think that'll become a memorable game, and India do have an upper hand. Ajay? आई थिंक अगर इंग्लैंड के पूरे बैट्समैन अवेलेबल हैं तो इंडिया के लिए अप फ्रंट विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि नए बॉल से भुवनेश्वर कुमार एंड जो भी उनके साथ डालेंगे ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा, अप फ्रंट विकेट लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. All right, gentlemen, we'll leave it at that. Thank you so much for joining me on the program and sharing your views and putting things into perspective for us. It's time to go across live to Pune now, where we will get set for the English batting. That's it from me. See you again later.